Hello. Hi, am I audible? Hello, hello. Yeah, I'm audible. Thank you. Okay, so welcome everyone. Very good evening and Jai Hind once again. Today, my objective is to cover a vector part. Vector basically it's very important data types, and this vector is very commonly used in Verilog. And if you don't know the basic things about the Verilog, then basically you cannot use it for how to declare it, how to use it, how to use the single bit, how to use the part bit, okay, how to compare it, how to concatenate it, how to replicate it, okay. So there are many things which is related to the vector, okay. So vector is something what exactly the vector is that it's a group of data, okay, which is basically act as a signal. Okay, so this is what we are going to discuss today, and very important topic. And if we miss this topic, then definitely you are not going to understand the very long. So myself, Vaibhav Mishra, I am your uh, mentor and founder at Pine Training Academy. And as you know that we are working on this segment from last this February of this month, and I have personally covered. Today is my 25th session, and my colleague Devansh and Vivek is taking care of the other modules like programming and analog respectively. Soon I am planning to introduce the PCB and embedded, and later on let's see how and up to what extent we can cover the topic for your better understanding. Okay, so let's move to the PPT. Okay, so let's start. So again, why I'm focusing on PPT? Because through PPT I can give you the better idea about each and everything. Why? Because if we go by some book, okay, अगर हम किसी बुक को पढ़ते हैं तो हम लोग उसकी लाइन को इजिली समझ सकते हैं. ओके, आप उस लाइन को समझकर आप उस किताब में और अच्छी सी चीज़ों को पकड़ सकते हैं और उसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं. राइट, सो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लेन थ्रू प्रोग्राम और थ्रू राइट इट. ओके, बट यस, अगर हमारे पास कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन है इन पैरेलल, सो हम उसको बेसिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे उसको करना है. ओके, मतलब कैसे उसको पढ़ना है या कैसे उसको करना है. राइट, so let's start with this today vector, right? So as I mentioned in that what is exactly a vector is, so let me explain you the line by line. A vector is a collection of multiple bits. A vector is a collection of multiple bits grouped together and treated as a single signal. Okay, if you remember, for example, a basic example is a 4-bit adder, the 8-bit adder, 4-bit subtractor, 8-bit subtractor, or you can say a 10-bit mux. Okay, so your input will be your in 10-bit, that is in a group of, that is in a group of binary bits 0010, 11001. Okay, so anything which is formed in the form of group of bits is called a vector. Okay, if you remember in schematic design we call this as a bus. Okay, where on a single line we have to bring or basically we have to add a multiple bits.
Okay, so here it is clearly mentioned that vector is a multiple bits like 0, 0, 1, 0. Okay, and which is grouped together and treated as a single signal. Okay, with the help of data types. Okay, and here the data types can be a reg, can be a integer, mostly the two reg, and it can be a wire also. Okay, wire means your connectivity data types, and reg and storage means reg, and your integer means your variable type or register type data types. Okay, so instead of declaring the many single bits, we can declare one multiple bit signal called a vector. Okay, one like T1, T2, T3, T4, T8, T100, T200, T201, T102, T103, 305, 306. Okay, the multiple, suppose that you have a multiple signals. So you have to mention all signals, then it is again a hectic job. So that is the reason. If you have a 500 signal, 1000 signals, okay, just connect with a single line. Okay, how? We'll let you know here. So suppose that you want to store a 8-bit data value. Suppose that you want to store a 8-bit data value. Okay, 8-bit or 1000-bit, anything. So either you write it here, reg 7 or reg 1000. आप यहाँ रेज 1000 से लेकर रेज एनीथिंग अप टू रेज 0 तक आपको लिखना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू यूज लॉट ऑफ टाइम टू राइट इट हियर. आप इजिली उसको लिख सकते हैं सिंपल रेज 7:0. ओके, और रेज 1000:0 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको अगर आपके पास 1000 है तो आप इसको 999:0 लिख सकते हैं. ओके, सो दिस इज अ वे बेसिकली you have to write it. Okay, so what is a vector? A vector is a collection of the multiple bits grouped together and treated as a single signal. Okay, बार बार इस पीपीटी को देखो पढ़ो and make your notes. Very simple. Next, simple syntax. This is your basically a syntax. So basically अभी आगे की स्लाइड में आप देखोगे what is MSB LSB. Okay, so reg wire integer. ठीक है, sorry, integer, I think we cannot declare integer. या इंटीजर को हम लोग वेक्टर में नहीं डिक्लेयर कर सकते क्योंकि इंटीजर अपने आप में खुद एक रेंज होता है. सो आई एम सॉरी फॉर दिस. ओके, रेज एंड वायर बेसिकली और भी देख लेना पीपीटी पे क्लियरली व्हाट आई हैव मेंशन्ड देयर प्रीवियसली. तो बट आई एम 100% श्योर दैट रेज एंड वायर इज बेसिकली यूज्ड अंडर द वेक्टर. सो इसका सिंटेक्स क्या होता है? एमएसबी एलएसबी, एमएसबी एलएसबी, एंड दिस इज योर नेम. ओके, देखो फॉर एग्जांपल 7:0 डेटा, 15:0 एड्रेस, 3:0 count. So basically your data is 8-bit, address is of 16-bit, and count is of 4-bit. Okay, so here is the example that here MSB and LSB. MSB means most significant bit. Okay, so this is your MSB and this is your LSB. Okay, right is your MSB and left is your, or if I say this, if this one, okay, basically this is your left, this is your most significant bit, this one. Okay, so this is your MSB and this is your LSB. Okay, so bit position, so ये लिखेंगे कैसे इसको? So data 7, data 6, data 5, data 4, data 3, 2, 1 and 0. So 7 to 0, 7 to 0. Okay, just for information, I have not gone through many video, but I have seen some of my students are saying ki sir, why you are making videos so lengthy and so so time taken. Generally कोई भी स्टूडेंट होगा जो इतना टाइम नहीं देगा. ओके, सो एक्चुअली मेरा क्या मानना है कि इट्स योर कॉल. अब एक बार में ही आप इतना पढ़ लो कि दोबारा ना पढ़ना पड़े, या फिर आप शॉर्ट वीडियोस में सिर्फ उतनी चीजों को पढ़ो
ठीक है, जिससे आपका ना प्रोग्रामिंग एटीट्यूड नहीं बन पाएगा। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग एटीट्यूड बनाना है या सिर्फ आपको इंटरव्यू निकालना है या आप आगे जाकर आपको काम नहीं कर पाना है, ठीक है, आपको जॉब में रहकर काम करना है या सिर्फ इंटरव्यू निकालना है, वो आपका गोल है। क्या है आपका गोल? इफ यू वांट टू क्रैक द इंटरव्यू और यू वांट टू वर्क इन अ कंपनी, so if you want to work in a company, okay, you have to invest the time. Or if you just want to crack the interview and later on you don't want to work in a company or you will not perform in a company, that every time you are looking for basic thing कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, then you will definitely going to be a fire. Okay, after 3 months, 6 months, you will not get a PPO or you will be out from the organization. So let's work for one thing and that is for the best thing. एक बार में इतना अच्छा काम करो कि वो आपको हमेशा के लिए हेल्प करे. So that is the reason I am making so lengthy PPT so that मैं एक एक चीज को कवर कर सकूं. ओके अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो तो अगर आप उन स्लाइड्स को यूज करके उस कंटेंट को यूज करके आप अपना नोट्स बना लोगे, ओके फिर जब आप उसको अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करोगे तो देखो आपको कितना फायदा होगा. ठीक है, आपके एरर्स जल्दी सॉल्व होंगे, आपको एरर्स नहीं दिखेंगे या अगर आपको एरर्स आएंगे तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे. तो ये सब सोच के मैंने इस पीपीटी को बनाया है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू जस्ट क्लियर द इंटरव्यू, ऑब्जेक्टिव इज टू परफॉर्म इन अ कंपनी. दिस इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव. ओके, I hope this is clear to everyone. Okay, so MSB and LSB. The most significant bit, that is your right side is your most significant bit and left side is your least significant bit. Okay, so basically the how the bit position is there, data 7, data 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, now you can call these data one by one also. Okay, how? We'll see. Okay, this is just a simple example. Basically, how you will call the vector. So, reg. Okay, रेज डेटा. ओके कितने बिट का है? 8 बिट. ओके और उसके वैल्यू हम कितना असाइन कर सकते हैं? 8 बिट. तो वी हैव असाइन 8 बिट 1 2 3 4 5 6 7 8. क्या होगा अगर हम इसको कम असाइन करेंगे, ज्यादा असाइन करेंगे? वो भी एक क्वेश्चन है. ठीक है, व्हाट हैपन इफ वी असाइन ओनली अ 7 0 1 0 0. सपोज दैट इफ वी असाइन अ 4 just to make it 8, 0 will added. Okay, and if it is like 1 0 0 0 1, what happened? In that case, again 0 will added to make it 8. What happened अगर मैं इसमें 9 दे दूं? 1 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8. What happened if it is 9 bit? Then the most significant bit is truncated. Okay, just to maintain the 8 bit. ओके तो ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम हमने कहीं ना कहीं किसी कंटेंट के अंदर हमने कवर किया हुआ है. ओके, डेटा एलिमेंट्स के अंदर हमने, लैंग्वेज एलिमेंट्स के अंदर हमने कवर किया है, तो उस चीज को हम यहां पर भी कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, अगेन अ वेरी सिंपल एग्जांपल. ओके, वन मोर थिंग अगेन आई वांट टू शो यू गाइस कि ये जो बेसिकली दिस, okay, these are basically your uh, system task. Okay, basically, okay, so these things are not using again used in any synthesizable code. Okay, just this is for a simulation purpose कि आप डिस्प्ले लगाकर जस्ट आप चेक करना चाहते हो. ओके तो एग्जाम्पल है मॉड्यूल वेक्टर डिस्प्ले. 8 बिट का डेटा है, उसको आपने यहाँ असाइन किया है. नाउ यू वांट टू टेक और यू वांट टू चेक इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट. ये 10 10 10 10 in a format of binary, in a format of decimal, convert this into the decimal and convert this into a hexa. So 10 and 10. So this is A. Okay, and if you convert 10 10 10 10 in a decimal, then 0 1 2 3 4 5 6 7. So you have to basically do like this: 7 into 1 into 2 to power 6 plus 1 into 2 to power 5 plus 1 into 2 to power 4. Okay, then you have to convert into the decimal. 2 to power 3, 1 into, okay, oh, sorry, again, this is 0, this is 1,
this is 0, okay, this is 1, this is 0, 2 to power 2, 1 into 2 to power 1 plus 0 into 2 to पावर 0। तो अब आप इसको ऐड करोगे 128 प्लस 0 प्लस 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0। ओके, तो 128 32 8 4, 8 plus 2 10, 10 plus 8, I'm correct, 1 into 2 to power 1 2, okay, sorry, this is 2, sorry, this is 2, okay, this is 2 actually, not 2, okay, 8 plus 2 10, 18 20 0, 2 carry 2 5 2 7 170। ओके, सो इस तरह से बेसिकली डेसिमल कन्वर्ट होता है। ओके, सो बीच बीच में बेसिकली ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमें अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिकली वेक्टर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, यूज कैसे करते हैं, रिटर्न कैसे करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अगेन बिट सेलेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली वेक्टर इज डिवाइडेड इनटू द टू, बिट सेलेक्ट एंड पार्ट सेलेक्ट, बिट सेलेक्ट एंड पार्ट सेलेक्ट। ओके, सो व्हाट इज बिट सेलेक्ट? बिट मीन्स अ सिंगल लाइन, अ सिंगल डेटा। अगर मुझे एक बल्क डेटा में से एक सिंगल डेटा को निकालना है, ठीक है, एक बल्क डेटा में से एक सिंगल डेटा को निकालना है, देन इट इज कॉल्ड अ बिट सेलेक्ट। अब देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अ सिंगल बिट कैन बी एक्सेस यूजिंग इंडेक्स 7:0 डेटा। So this out from this 7, from this out of 8 bit, if I want to take the 0th bit, then this is how we will take the 0th bit. Okay, and this, and if I want to take the highest bit, this is how we are taking the highest bit. अगर मुझे इसमें से कोई बीच का डेटा निकालना है, बीच का बिट निकालना है, तो it will be look like this, data like 3. So this is also called a bit select. Okay, so make sure you have to use this square bracket. Okay, no curly bracket and no normal bracket. Okay, so let's see, module bit select reg 7:0 initial begin। ये मैंने एक डेटा लिया, इसमें बोला कि भैया मुझे एमएसबी का डेटा दो। ठीक है, मुझे सबसे एमएसबी निकालना है, तो एमएसबी ये हो गया। ओके, 7 सबसे 7 पार्ट ये हो गया, एंड एलएसबी ये हो गया, ये एलएसबी हो गया, और इसका डेटा देखो यहां पर मैंने बता दिया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ बिट सेलेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड अ बिट सेलेक्ट। ओके, बच्चे नहीं बता पाते हैं जब वो इंटरव्यू में जाते हैं। ओके, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज बिट सेलेक्ट इन वेक्टर, व्हाट इज पार्ट सेलेक्ट इन वेक्टर, सो दे डोंट हैव द बेस्ट डेफिनेशन। सो बिट सेलेक्ट इज, so what is a bit select? Bit select is basically a single bit value which we have to extract from the group of data. And what is part select? Let's see what is part select. Oh, ओके, डेटा चला गया, एक मिनट। ओके, आ गया, नेक्स्ट। ओ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है?
I'm facing some problem here in my system. Just hold on. Okay. Okay. So I think now I will not make it full screen. Maybe the reason. Okay. I think it's visible to everyone. Okay. So now what is part select? A group of bits can be selected. Okay. तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? सिंगल बिट को उठा रहे थे. Now what we have to do? Now we have to select a group of bit out of 8 bits, like 5, 6, 7. Okay. Or 1, 2, 3. Okay. 5, 6, 7 or 1, 2, 3. So देखो, what is part select? A group of bits can be selected syntax, for example, vector name, MSB and LSB. Okay, so basically ये थोड़ा उल्टा लिख गया है. Basically your syntax. Okay, तो okay, this is something different. तो यहाँ पर basically क्या है, आपको जो डेटा यहाँ पे उठाना है वो एमएसबी और एलएसबी के फॉर्म में आएगा. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 8 बिट का डेटा है. नाउ यू हैव टू कॉल द लाइक बिटवीन 7:0, देन यू हैव टू कॉल between data. Okay, the data between the 7 to 0. For example, I am calling 7 between 7 to 4. That is 7, 6, 5, and 4. And I want to do it some operation. So this is the how. Data 3 to 0 means 3, 2, 1 and 0. Okay, so part select का मतलब क्या हुआ? That is a group of data. Okay, now program. Okay, छोटा सा प्रोग्राम है. जस्ट फॉर एग्जांपल कि जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि इसमें से अपर डेटा निकालना है और लोअर डेटा निकालना है. तो सम इन जस्ट फॉर एग्जांपल फॉर अ पार्ट सेलेक्ट. ओके, पार्ट सेलेक्ट का ये एग्जांपल है. तो मॉड्यूल पार्ट सेलेक्ट रेज 8 bit data, that is 7:0. Some data you have initialized 1101 and 0010. Okay, so now you have to display the data upper as 7:4. 7:4 क्या हो जाएंगे? 7, 6, 5, 4. एंड लोअर में क्या हो जाएगा? 0110. देखो, दिस इज द एग्जाम्पल 0110. ओके, नेक्स्ट. Vector concatenation. Concatenation, if you are good in programming, if you are familiar with the C and C++, if you are okay with everything like all the operators in C and C++ or in some other programming language, then there is an operator known as a concatenation operators. Okay. So what is concatenation operators? So concatenation operator is basically when you have to basically merge it. Okay, you have a one data A and one data B, and you want to merge it and to make it one. That is called a concatenation operator. So just one example. Okay, you have a data AB of 4 bit and you have data C of 8 bit. Okay, so now here AB is merging. You can say this is a symbol. Okay, देखो इसको अच्छे से समझ लो. दिस सी, ये जो आपका कर्ली ब्रैकेट है, राइट, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए आपका 4 बिट है और बी आपका 4 बिट है. तो टोटल मिला के कितना हुआ? 8 बिट हुआ. ओके, अभी 8 बिट आपका कहां पे सेव हो रहा है?
सी में सेव हो रहा है, और सी आपका क्या है, 8 बिट है। ओके, तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। सी आपका क्या है, 8 बिट है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड कंकेटेनेशन ऑपरेटर। कोई भी डेटा आपको ऐसे और ऐसे बीच में ले लोगे, ए कॉमा बी। ओके, तो जब हम ऑपरेटर पढ़ेंगे तब आपको और इजली समझ में आ जाएगा। ये तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा मटेरियल मिल रहा है ऑपरेटर के बारे में। Okay, so basically, in this PPT, I have basically covered how this vector is used with the different types of operators, or with different types of a syntax. Okay, so that is the main purpose. I can finish this PPT in 2 or 3 slides. Okay, but तब थोड़ा सा ये होता है कि हमने कुछ पढ़ाया नहीं है और हमने कुछ पढ़ा नहीं है। ओके, तो आगे देखते हैं। Next slide is your see, the result is same. Okay, replication. Now what is replication? Just a concatenation operators के अंदर it is just a connected with a with somehow it is connected with a concatenation भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उसके अंदर एक नया फीचर ऐड हो गया है कि रेप्लिकेशन मतलब कोई एक ग्रुप ऑफ डेटा है जिसको आप एक न्यूमेरिक वैल्यू के साथ ऐड करके उसको डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो, 4 टाइम्स कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, so this is your actually a numeric number. Okay, this this is basically your numeric number. Okay, n can be 1 2 3 up to any number. Okay, तो एक्सप्रेशन, अब आप देखो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है आपका, एक तरीके से कहीं ना कहीं कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इस एग्जाम्पल को लेता हूं, फिर एक अपने तरीके से एग्जाम्पल समझाता हूं। तो सरेज 8 बिट का डेटा लिया, ठीक है, एंड देन डेटा को मैंने न्यूमरिक के साथ यहाँ पर बेसिकली जो एक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेटा इक्वल टू, अगर हमें लिखना है 4a, ठीक है, और यहाँ पे जो a है वो आपका, a जो है आपका वो है 2 tick b 10। ओके, तो बेसिकली ये 10 क्या होगा, 4 टाइम्स ऐड हो जाएगा, 10 10 10 10। ओके, सो दिस इज वन थिंग। ओके, आप इसको और कैसे लिख सकते हो, ठीक है, 4 ठीक है, ए और बी आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो बी है आपका, ठीक है, अब इसको मैं 4 को कम कर दूंगा, इसको मैं कम करके 2 कर दूंगा, 2, ठीक है, 2 a and b, and here a is 10 and b is 00। तो ये कैसे काम करेगा, a की वैल्यू 10 10 एंड b की वैल्यू 00 एंड 00, तो ये ऐसे काम करेगा। ठीक है, ओके, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि बेसिकली कॉन्केटेनेशन एंड रेप्लिकेशन दोनों एक साथ भी यूज हो सकता है और अलग अलग भी यूज हो सकता है। ओके, तो अगेन ये कहीं ना कहीं वेक्टर के अंदर काम कर रहा है। ओके, ग्रुप ऑफ डेटा, तो कहीं भी आपको ग्रुप ऑफ डेटा दिख रहा है, दैट मीन्स अ वेक्टर। ओके, वेक्टर विथ मिसमैच। ओके, मैंने शायद स्टार्टिंग में कवर किया था। सो सपोज दैट assigning smaller value to a larger vector, assigning a smaller to a larger vector. For example, you have taken output as a 8 bit. For example, you have taken output as a, for example, you have taken output as a 8 bit. Okay, for example, you have an output as a 8 bit. Okay, but आप जो डेटा आप इसको दे रहे हो, आप इसको डेटा सिर्फ 4 बिट का दे रहे हो, 10 10, तो रेस्ट 4 बिट में ये 0 आ जाएगा टू मेंटेन द 8 बिट। ओके, तो 0 आर एडेड टू द लेफ्ट। तो ये एक आपका बेसिकली
वेक्टर का ही एक एग्जांपल है जहां पर आपको आपके पास असाइनमेंट आपके लार्जर एंड पर है और आप वैल्यू आप दे रहे हो लोअर एंड पे. सो टू मेंटेन द दोस लार्जर एंड you have to basically either add 0 0 0 or tool will take care of it, right? Next, assigning a larger value to a smaller. वही है. अब larger value to smaller. Okay, ये केस और डिफरेंट है. Okay, ये केस देखो क्या था. आपके पास 1010 था, 0000 ऐड हुआ. Okay, देखो your 1010 is retained, but here in that case assigning a larger value to a smaller, assigning the larger value to the smaller. So you have a output of basically 4 bit and you are giving the 8 bit data. तो ये यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों में कि यार मैं 3 है तो मैं इसको ले लूं. नहीं, ऐसा नहीं है. 3:0 बेसिकली टोटल डेटा इज 7:0. 7 7 6 5 4 3 2 1 0. Basically data is 7 6 5 4 3 2 1 0. And now you have to take a 3:0. तो 3:0 कहां से स्टार्ट होगा? 3 2 1 0. तो बेसिकली यू विल कवर दिस डेटा ओनली. ओके, अगर आप यहां पर इसको लिखते 5:0 देन 5 4 3 2 1 0. अगर आप यहां पे लिखते 1:0 देन 1:0 कवर होता है. सो अपर बिट्स आर ट्रंकेटेड, मतलब जो भी लेफ्ट साइड पे बिट्स हैं, राइट साइड में बिट्स हैं, वो सारी ट्रंकेट हो जाएंगी. ओके, नाउ वेक्टर एज अ बसेस. अगेन वेक्टर मैंने स्टार्टिंग में बोला था स्कीमेटिक के अंदर कि बेसिकली इन स्कीमेटिक डिजाइन वी यूज अ वेक्टर. ओके, वी यूज अ वेक्टर एज अ buses. Okay, because when just like a simple road-based bus, okay, a single bus, a single element or single object where there are many people are just sitting. Okay, so a single I can say a single number which is transporting the many things. ओके, तो बिल्कुल उसी वे में है बस भी. ओके, सो यू हैव अ सिंगल लाइन एंड विच कैरी द 32 बिट्स ऑफ डेटा. ओके, सो बेसिकली दिस डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर सम माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, वॉट एवर कोई भी आप डिजाइन करोगे तो इन वेरीलॉग बेसिकली यू हैव टू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ वायर और रेच. ओके, नेक्स्ट वेक्टर एग्जांपल लाइक 4 बिट. देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है. ओके, लाइक ओके, सो अगर सपोज करो इफ यू हैव टू ऐड समथिंग, राइट, एडिशन, योर अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे काम करेगा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर. सपोज दैट वी हैव टेकन अ डेटा ऑफ 3:0 ए बी. 4 बिट का डेटा लिया है ए एंड बी एंड देन 5 बिट का डेटा लिया है सम. ओके, 4 बिट का डेटा लिया है ए एंड बी, 5 बिट का डेटा लिया है सम. नाउ असाइन सम ए एंड बी. सो ए की वैल्यू क्या है? 10. Okay, that is in decimal. याद रखना, this is a 10. Okay, this is not a 10. This is a 10 and B is 5. So 10 plus 5 क्या होता है? 15. So 15 can be come within a 5:0. Sorry, 4:0. तो देखो 15 का अगर मैं बाइनरी करूंगा तो 1111 आएगा. Okay, but on higher side we have taken a data up to the 5 bit. Okay, so don't be get confused. This is decimal, this is decimal. Okay, size radix number, size radix number. So here we have taken a decimal. So basically यहाँ पे जो arithmetic addition हो रहा है ना कि binary addition हो रहा है. Okay, you need to understand that this is a arithmetic addition and not a binary addition. Okay, so but exact this is the example of your what? Vector. Okay, again this, if any value is given in terms of vector, it can be compared also. Compare like कोई भी relational operator use कर लो, less than, greater than, less than equal or greater than equal. Okay, so ये सारे operators हैं. Please, I am just telling you once again, these operators we are going to discuss in very detail when we are working on the operators. Okay, so this is your just one example, D20 decimal एंड D15 डेसिमल. सो एक फॉर्मूला लगा दिया या फिर एक ऑपरेटर लगा दिया, ए ग्रेटर देन बी, यस 20 इज ग्रेटर देन, यस ट्रू, ए इज ग्रेटर देन ट्रू.
सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, अब क्वेश्चन ये है कि ये ए और बी मैंने 8 बिट का क्यों लिया है। ओके, क्वेश्चन ये है 8 बिट का मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इस 20 को बेसिकली इस 20 को जब हम बाइनरी में ब्रेक करेंगे, ओके, तो ये बाइनरी में आना चाहिए, राइट। जैसे कि 1111 1111, अगर मैं अब इस पे 10000 16 01 17 10 18 11 19, okay, then 100 20, so 10001। so basically ये जो 20 है जो हम डिस्प्ले करेंगे बाइनरी में 10100, okay, so this is the binary of 20, okay, and I have taken up to the maximum 8 bit, so this is 5, now 1 2 3, so 8 is added now, so total 8 bit, ओके, सो टोटल 8 बिट में मैंने क्या लिया है 20, और 15 का क्या हो गया हमें पता है 1111 0000, सो दिस इज योर 15, ओके। सो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। व्हाट इज दिस, इज योर ग्रेटर देन ऑपरेटर, दिस इज योर मैथमेटिकल ऑपरेटर, यू नो दैट इफ 5 is greater than 3, then boolean output is true, expression is true. If 5 is greater than 7, false, ठीक है, दिस इज 1 एंड दिस इज 0, ओके। सो यहां पर अगेन ओनली द कॉन्सेप्ट इज वेक्टर, ओके, ओनली द कॉन्सेप्ट इज वेक्टर। Vector is a sign and unsigned. So just for information, everyone, vector is always sign. Okay, vector is always sign. Sorry, unsigned. Sorry, unsigned. Vector is always unsigned. That is positive. Okay. तो अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना है तो देखो उसका एक एग्जाम्पल है, ओके। ए डेटा लिया मैंने 8 बिट में, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सभी को मैंने 111 दे दिया, तो वो अनसाइंड कैसे काउंट होगा, बेसिकली वो अनसाइंड कैसे काउंट होगा, ऐसे कन्वर्ट इनटू द डेसिमल, तो इट इज अ 255, ओके। एंड टू ट्रीट इट एज अ साइन, सेम थिंग, अगर आपको आइडिया है या नहीं है, ओके, तो ये -1 कैसे आया, क्वेश्चन इज -1 कैसे आया, बहुत इजी है, 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो अगर कोई भी डेटा आपको 2s कॉम्प्लीमेंट करके ये ऐसा आता है, तो जो पहला बिट होता है दैट इज योर साइन मैग्नीट्यूड, सो -1 इज 0 1 2 3 4 5 6 7, so if I am counting it as a unsigned, then it is a 255. But if I am counting as a sign, then this is a -1. How? 255 if you convert into the decimal, right? Like 1 into 2 to power 7 से लेकर up to 1 into 2 to power 0 तक, ठीक है। तो ये 255 होगा, लेकिन ये -1 कैसे होगा, अगर मैं -1 into 2 to power 7 plus 1 into 2 to power 6, 1 into 2 to power 5, 1 into 2 to power 6, sorry, अरे यार 4 plus 1 into 2 to power 3 plus 1 into 2 to power 2 plus 1 into 2 to power 1 plus 1 into 2 to power 0. तो नाउ इसको आप कैलकुलेट करो, -128 प्लस 64 32 16 8 प्लस 4 प्लस 1, सॉरी प्लस 2 प्लस 1, तो अगर आप इनको जोड़ोगे, ऐड करोगे, इफ यू ऐड इट 32 16 8 4 2 1, 4 2 6 12 20 24 28 6 12 18 12 20 24 26 7, 2 carry, and 6 3 9 10 11 12 127, so -128 plus 127,
-1. ओके, सो सबके अपने अलग अलग फंडे हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, सो दिस इज वन थिंग. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, अर्थमेटिक अगेन सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं. नाउ अगेन अ सेम एग्जांपल, ए बी 8 बिट, सम 9 बिट. ओके, इससे पहले हमने 4 बिट का किया था, जस्ट फॉर एग्जांपल 9 बिट. सो इनिशियल बिगिन, ए की वैल्यू 100 एंड बी की वैल्यू 5. सो यू हैव टू चेक दिस 100 विल कम विद इन अ 5. 32, 64, 128, 7. Okay, so 128. So this 7 will, A will come within a 7 bit and B will come within a again a 7 bit. Okay, again a 5 or 6 bit. Okay, but on higher side we have taken a 8 bit. Okay, so if you add it 150, now you have to check 128, 256, 2 to power 7, 128. Yeah, so basically it will come between the 2 to power 7, 8, 8 to 9. So this will come between 2 to power 8 and 2 to 9. See, 150. Okay. Vector shifting. This is your shifting operator. Okay, don't need to worry. Okay, so basically the shifting operators works on vector only. ठीक है, वो कोई भी सिंगल वैल्यू पे काम नहीं करेगा. शिफ्टिंग ऑपरेटर्स, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट. सो आगे जाकर हमें राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ना है. ओके, तो वो आपको अभी एक्सपोजर मिल गया है कि व्हाट इज राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड व्हाट इज अ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर. सो कोई भी चीज इधर को निकली है, ओके, द दिस कोड दैट इज दिस इज अ राइट शिफ्ट. एंड अगर कोई ये वाला, ये कोण इधर को है, दैट मीन्स दिस कोण पार्ट, दैट मीन्स लेफ्ट शिफ्ट. ओके, सो हेयर मीन्स द टू डेटा, ये दो डेटा बाहर निकल जाएगा, दिस. ओके, टू मेंटेन द बिट, this two data will be out. Okay, so this will shift here, this will shift here, this will shift, this will shift, and rest two data will add here to maintain the 8 bit. Okay, to maintain the 8 bit, 8 बिट को मेंटेन करने के लिए दो डेटा शिफ्ट हो जाएगा. ओके, और दो डेटा आ जाएगा. ओके, सो आप देखो यहां पर ये 1010 शिफ्ट हो गया और दो डेटा ऐड हो गया. ओके, एंड सिमिलरली अ राइट शिफ्ट, this is called your right shift and this is called your left shift. Okay, this is called your left shift actually, sorry, this is called your left shift and this is called your right shift. Okay, when you are seeing like this, किसी भी ऑपरेटर को अपने सामने देखते हो तो this is your right shift and this is your left shift. Okay, reduction operators. Okay, we'll later on we'll see reduction operators. What is reduction? That is, a reduction operator is always work on vectors only. Okay, matlab you have a minimum 2 bit. Okay, it's always on multiple bit. Multiple bit means minimum 2 it should require, minimum 2 to any number, 2 to 1000 any number. So basically reduction operators always work on वेक्टर. प्लीज ये नोट कर लेना, रिडक्शन ऑपरेटर ऑलवेज वर्क ऑन वेक्टर. तो ये और ये इसके बीच में मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज एंड ऑपरेटर्स. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज. ये दिस इज जस्ट एग्जांपल ऑफ अ रिडक्शन, जस्ट एग्जांपल ऑफ वेक्टर. ओके, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द ऑपरेटर्स. ओके, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द ऑपरेटर्स नाउ, आई एम डिस्कसिंग about a vector. So vector always work only with the reduction operators, or I can say the reduction operators always perform on a vectors. Okay, so अगर उसके पास एक से ज्यादा इनपुट नहीं होगा तो वो रिड्यूस नहीं होगा. ठीक है, रिड्यूस होना जरूरी है. तो 1 और 1 के बीच में एंड लगा, दिस इज योर बेसिकली अ एंड ऑपरेटर. ओके, एंड एवरीवन नो व्हाट इज एंड. ओके, सो 1 and 1 output क्या आया, 1. Now this 1 will multiply with this, sorry, with ending with this 1. What will be the output? 1. And this 1 will multiply with this, put 1. So what is final output? 1. Okay, this is your OR operator and this is your XOR operator. Okay, so 0 and 0 के बीच में और लगा, आउटपुट क्या आया, 0. Now next क्या है, 1.
इसके और इसके बीच में 1 लगा, आउटपुट क्या है 1, एंड अगेन 1 एंड 1 के बीच में आउटपुट क्या लगा 1, तो फाइनल आउटपुट इज योर 1. ओके, वेरी सिंपल. नाउ व्हाट इज दिस XOR? तो 1 0 पे क्या आता है 1. ओके, मे बी इधर कुछ गलत हो सकता है. ओके, 1 0 पे क्या आता है 1. नाउ दिस 1 विल मल्टी विद oring with this, then output is 0, and this 0 and 1 will output with this 1. So this is your final output. Okay, so ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन ऑपरेटर. So the story is very simple. The story is very simple. The operators like reduction operators work only on vectors. Okay, next is, I think next is your bitwise. Okay, not bitwise, is a equality operators. So again you want to compare something. Okay, इससे पहले हमने क्या देखा था, लेस देन ग्रेटर देन. ओके, नाउ यू आर कंपेयरिंग. Okay, so if it is equal then output is 1, if it is not equal then output is 0. Again, it is here we are not working up to the 0 or 1. Here we are working from 0 to the integer values. Okay, -24 से लेकर +24. So definitely it is has to be those integer or those decimal number, basically it has to be in a vector form. Okay, तो वो range के form में होगा, right? So for example, suppose that 10, this 10 you want to compare this 10 with 10. So what is 10? So how we write a 10? 1 0 1 0. So what is this? Say down to 0. This is equal to 10 1 0 1 0. So output is true. Okay, if 10 is not equal to 9, yes, correct, 1 0 1 0 is not equal to 1 0 0 1, then it is also a true. Okay, so basically the objective is, the story is that in any equality operators, either it is a case equality or logical equality operators, we have to use what? We have to basically take a help of the vectors. Okay, see here, पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल में. तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस, कि जब हम ऑपरेटर पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर कैसे काम करता है उसके अंदर. ओके, ओके, बिटवाइज ऑपरेटर्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जब हम बिटवाइज ऑपरेटर करेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है. बिटवाइज मीन्स bit to bit. Okay, bit to bit. Again, the bit operator will not work on on a single value. Bit operator just like a reduction operator. Okay, reduction and bit both are working on multiple bits. Okay, both are working on multiple bits. So when I'm saying multiple bits, that means the vector will come in the picture. That means the vector will come in the picture. Okay, so just for example, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, a XOR b. So a is 10 and b is 9 for example. Okay, so what is a की वैल्यू क्या है 1 0 1 0 and 9 is what 1 0 0 1. So basically you are doing a XOR b. So 1 0 1 0 XORing with 1 0 0 1. So basically this will do the XORing with this, with this, with this, and with this. So your output is 1 and 1 is XORing 0. 0 and 0 is 0. 1 and 0 is 1. And 0 and 1 is 1. So this is your final output. So again, the output is in bus only. Okay. This one is your, okay. This is again memory. Okay, so memory होता क्या है, memory basically you have a different locations, and in every location you have some bit stored. So again this different location, like location 1 location 2 location 3 location 4 up to location anything. तो हर लोकेशन पे आप कितना बिट आप स्टोर कर रहे हो. ओके, हर लोकेशन पे आप कितना बिट स्टोर कर रहे हो. तो लोकेशन विल आल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर. Okay, that is in a group of value, and your bits per location will also define in the form of vector. Okay,
in the form of vector. So here 7 is to 0 memory, 2 is to 5. That means 8 location. That means you have a you'll see here. Okay, basically you have a 255, 256 locations. Okay, location like this. Okay, so you have a 256. We have a 256 location, and per location you have 8 data. ओके सो इसको भी आपने डिफाइन किया है वेक्टर में, दैट इज अ 255 इज टू 0 और 0 इज टू 255 एनीथिंग, एंड ये जो पर बिट डेटा है इसको भी आपने डिफाइन किया है 0 इज टू 7 और 7 इज टू 0. ओके, दिस इज हैवली यूज्ड इन रैम मॉडलिंग. सो लेटर ऑन हम लोग कोई रैम मॉडलिंग का एग्जांपल करेंगे, तो उसमें हम लोग कैसे मेमोरी को यूज करेंगे वो देखेंगे, राइट. ओके, तो वेक्टर इनिशियलाइजेशन यूजिंग कॉन्केटेनेशन. अगेन देखो, आई एम गिविंग माई बेस्ट. ओके, जो भी मुझे एग्जाम्पल समझ में आता है कि हाँ ये दिस इज बेस्ट फॉर माई किड्स. ओके, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनकी लर्निंग के लिए, उनके बेटर नॉलेज के लिए उसको एक्सट्रैक्ट कर करके एक पीपीटी में पॉइंट डालो और उनको समझाओ, सो दैट जब भी वो इससे फैमिलियर होंगे उनको समझ में आएगा, राइट. सो दिस इज योर कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर्स. तो अगेन, सो 15 मतलब कि 16 बिट का डेटा है, उसमें आपने ए 4 एंड 4 5 हेक्साडेसिमल, अगेन 4 एंड 4 टोटल कितने हो गए 60. बहुत इजी है. ओके, so your A means your 1010 1010. 5 means 0101 and 0101. So here it is total 16. ठीक है, डेटा मैंने किस में डिफाइन किया है 16 बिट में. तो आप देखो वही है. ओके, दिस इज वेरी सिंपल. हाई इम्पीडेंस, ओके, unknown and high impedance. Okay, so basically स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था द व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्स एंड जेड. ओके, so this x and z is basically what is x, what is z. X is your unknown and z is your high impedance. So yes, this is also a part of the vector. और जब ये पार्ट ऑफ द वेक्टर होते हैं तो ये भी एक पोजीशन को मैप करते हैं. ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है कि हमने इसको इग्नोर कर दिया है. दिस इज ऑल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल. Okay, especially in case equality operators and in a logical equality operators. Okay, sorry, in equality operators, that is a logical and inequality operators, and a case equality and case inequality operators. Okay, same. Okay, this is an industry interview question. Total 30 slides I have covered. So difference between red 7 is to 0 and sin 7 is to 0. Interview question है. ओके, रेज दिस इज योर, क्या होगा अभी मैंने बताया. ठीक है, तो ये आपका +1 देगा. अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ओके, जस्ट 1 1 1 1 1 1 1, तो दिस विल गिव प्लस 255. दिस विल गिव एग्जाम्पल ऑफ 255 एंड दिस विल गिव एग्जाम्पल ऑफ -1. ओके, व्हाट हैपन व्हेन अ लार्जर वैल्यू इज असाइंड टू अ स्मॉलर वेक्टर. लार्जर इज असाइंड टू अ स्मॉलर मीन्स क्या है कि अगर आपका लार्जर 7 8 पे अगर आपका 4 बिट का डेटा असाइन हो रहा है तो क्या होगा 0 0 0 ऐड हो जाएगा. ओके, डिफरेंस बिटवीन बिट सेलेक्ट एंड पार्ट सेलेक्ट. बिट सेलेक्ट इज 1, पार्टी सेलेक्ट इज ग्रुप. ओके, व्हाट इज रिडक्शन ऑपरेटर्स. So reduction operators always perform on a multiple bit. So it reduce the data one by one and give a output in a single bit. Okay, difference between the equality and this is your logical equality and this is your case equality. Okay, देखेंगे, अभी मैंने आपको ऑपरेटर नहीं पढ़ाया है. तो why are vector used instead of individual bit in RTL design? Because vector is used because vector will give you the better flexibility. Vector will help you in better flexibility in terms of prototyping the design. Okay, and vector will also reduce the coding structure, and vector will also reduce the complexity. Because if you have a many wires, thousands of wires or hundred of signals,
which you can connect in a form of the vector and use as a bit select or as a part select. ओके तो जब आप थ्योरी पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे, ओके यू ब्लॉक ऑल्सो पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तभी आप स्टैंड कर पाओगे, अदरवाइज आप स्टैंड नहीं कर पाओगे. ओके सो माई टीम इज वर्किंग वेरी हार्ड, ओके टू गिव यू द बेस्ट डेटा. डोंट टेक दिस डेटा एज अ रील, कि रील की तरह स्क्रॉल करते चले. वन बाय वन एक स्लाइड्स को पढ़ो, समझो, नोट्स बनाओ, पढ़ो, समझो, नोट्स बनाओ. और जब हम इसको प्रोग्रामिंग पे आएंगे, ओके जब हम प्रोग्रामिंग पे आएंगे तो हम इसको और अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होंगे. ओके सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड हियर. थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद.